Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the various Jyotirlings in India and these Jyotirlings are very important for competitive examinations क्योंकि कई examinations में directly पूछे जाते हैं. ठीक है. For example उनकी geographical location कहाँ है, वो कहाँ पर located है, या अगर वहाँ पर किसी नई चीज़ का inauguration हो रहा है, कोई नई statue का inauguration हो रहा है, और for example if there's a new corridor that is being constructed there. So these play a very important role, and if you see the UPSC previous year's question papers, you might be seeing that there are multiple questions which are asked directly from the Jyotirlings in India. So today we are going to discuss all the 12 Jyotirlings and the locations and their importance in India. Okay, so let's begin with the first Jyotirling, Somnath Jyotirling. So Somnath Jyotirling, पहली बात तो located कहाँ पर है? Which is the state where it is located? It's located in Gujarat and near Gir. ओके, गिर में आपको पता होगा एशियाटिक लायंस इंडिया में सिर्फ गिर में मिलते हैं इंडिया में. So it is traditionally considered to be the first pilgrimage site, and it is the beginning of the Dwadesh Jyotirling pilgrimage, and इस टेम्पल को 16 बार डिस्ट्रॉय किया गया है. So write down in the comment section who was the invader who came and destroyed the temple 16 times and looted all the wealth from this particular temple. And Jyotirling, Somnath Jyotirling, which is located in Gir, Gujarat. ओके, तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने साथ साथ डाले हुए हैं जो पहले पूछे हुए हैं यूपीएससी में. ठीक है, ज्योतिर्लिंग्स पे. तो द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट. सो दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स. ओके, सो क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट नियर सोमनाथ टेम्पल इन वेरावल. Which of the following statements are correct regarding Somnath temple? So it is one of the Jyotirlings in India. Option 2, a description of Somnath temple was given by Al-Baruni. And option 3, Pran Pratishta of Somnath temple, installation of the present day temple was done by President S. Radhakrishnan. Okay, so first option is right. Somnath temple is one of the first Jyotirlings in India. Description of Somnath temple was given by Al-Baruni. This is also right. And Pran Pratishta of Somnath temple was not done by Dr. S. Radhakrishnan. It was done by Rajendra Prasad and Dr. Rajendra Prasad. Okay, so option 3 is not right. So when you remove option 3, you are just left with option 1 and 2. Okay, so option A is right. All right. India's Iron Man and first Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel on November 13, 1947 promised to rebuild the temple. ठीक है, तो अभी जो सोमनाथ का हम टेम्पल देखते हैं, that was inaugurated by India's first president Dr. Rajendra Prasad. ठीक है, तो इन्होंने बोला था, तो जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो इन्होंने करी थी in the existing temple on 11th May 1951. Okay, so here I have attached one photo also. Okay. So एक और क्वेश्चन था इस पे. Consider the following statements about Somnath temple. It is believed to be the first among the 12 Jyotirlings of Shiva. Okay, this is the right option. And that's why I focus on solving the previous year's questions, because many times the questions do get repeated, or else what happens is the question itself not might get repeated, but जैसे Somnath temple पे है, a question related to Somnath temple can be modified and asked in the next paper. Okay, so previous year's questions play a very important part in any examinations which you are preparing for. All right, so it is believed to be the first among the first 12 Jyotirling shrines of Shiva, which is true. Next is the present temple was reconstructed in the Chalukyan style of Hindu temple architecture. तो ये जो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हो उसमें ये चालुक्यन स्टाइल जो है ये आपने पढ़ा होगा. तो जो प्रेजेंट टेम्पल है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन अ चालुक्यन स्टाइल. दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. Okay, so which of the above statements are correct? Both option 1 and option 2. All right, so both the statements are correct. ठीक है, एक बार इसका explanation देख लेते हैं. This temple is also referred to as Ahilyabai temple, and it was built by Queen Ahilyabai of Indore when she found that the old temple was in ruins, and the present temple was constructed in the Chalukyan style of Hindu temple architecture. और इसमें the construction was completed by Vallabhbhai Patel, and it's a blend of Nagar and Dravidian style, evolved its own distinctive style and sometimes referred to as Vesara style of architecture. ये भी आपने पढ़ा होगा कि वेसारा चालुक्यन स्टाइल्स कौन से होते हैं आर्किटेक्चर के. ठीक है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज रीड द एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री के लिए. ठीक है, सो द लाड खान एंड दुर्गा टेम्पल्स एट एहोल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर.
ये भी पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, लाडखाल एंड दुर्गा टेम्पल एट एहोल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि है आंध्र प्रदेश में। Place is Andhra Pradesh. Which state? Andhra Pradesh. It is also called as Sri Saila, and it is located on the mountain in Kurnool district of Rayalaseema. ठीक है, the temple is architecturally rich and consists of various sculpture. The Shaktipeeth and Jyotirlings are together in this place. So many times आप देखोगे शक्तिपीठ और जो ये ज्योतिर्लिंग्स हैं वो कई बार कई जगहों पर साथ होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उज्जैन में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग्स हैं वो भी बताइए, ठीक है। आई टेल यू, देयर आर 3 ज्योतिर्लिंग्स इन मध्य प्रदेश। फर्स्ट इज महाकालेश्वर एंड second is 2 Mahakaleshwar and Omkareshwar. These are the 2 Jyotirlings in Madhya Pradesh. All right, so the temple is situated besides the Rudrasagar lake, and it is one of the 12 Jyotirlings of Lord Shiva. Mahakaleshwar idol is Dakshin Mukhi facing south, unlike all the Jyotirlings. ठीक है, तो this is a distinctive feature of Mahakaleshwar कि ये दक्षिण मुखी है and they are facing south, unlike all the other Jyotirlings. The temple is spread over 5 levels, seeing a huge throng of devotees during the Mahashivratri festival. वो तो बहुत obvious होता है कि शिवरात्रि के टाइम पे ज्योतिर्लिंग्स में बहुत भीड़ होती है, ठीक है। आर्किटेक्चर जो है, इट्स अ स्पेशियस courtyard that is adorned with finest sculptures that are believed to be influenced by Chalukyan, Maratha and Bhumija styles of structural design, ठीक है। Platform and the foundation and platform are built of stones, and the upper structure rests on the strong and well-designed pillars and pilasters. It is complete with the impressive lingam sculpture of Mahakaleshwar. Images of Ganesh, Parvati and Kartika are installed in the west, north and east of the Sanctum Sanctorum. Okay, so कहाँ पे लोकेटेड है महाकालेश्वर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछ लेंगे ज्योग्राफिकल जो स्टेट है कहाँ पर है, और इसमें इट इज बिसाइड द रुद्र सागर लेक, सो दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, ठीक है। दक्षिण मुखी हैं, और ये इकलौते हैं जो दक्षिण मुखी हैं, ठीक है। और चालुक्यन, मराठा और भूमिजा स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन यूज किया गया इनमें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। Now Omkareshwar Jyotirling. Now the name Omkareshwar is I've told you before that Omkareshwar is also in Madhya Pradesh. Okay, so the name Omkareshwar is derived from Sanskrit word Om and Kara mean Lord. Om shaped island. The temple is set on the island called Mandhata or Shivpuri in the Narmada river. ठीक है, and this island is unique as it is shaped in the word Om, which is considered to be the most sacred sound in Hinduism and represents Lord Shiva. The architecture is in the Peshwa architectural style and features intricate carvings and beautiful spires. ठीक है, इसमें भी प्रीवियस ईयर्स में यूपीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, ठीक है। So Madhya Pradesh Chief Minister unveiled 108 foot tall statue of oneness of Adi Shankaracharya at Omkareshwar, ठीक है। And the statue depicts Shankaracharya as a 12-year-old child when he is said to have visited Omkareshwar. ऑलराइट, सो स्टैचू ऑफ वननेस किसके लिए है ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आदि शंकराचार्य के लिए ये, ठीक है। सो ओमकारेश्वर टाउन इज लोकेटेड ऑन द मंदाता आइलैंड ऑफ खांडवा डिस्ट्रिक्ट. इट विल फॉर्म एन इम्पोर्टेंट टूरिज्म सर्किट अलोंग विद उज्जैन, माहेश्वर एंड मंडू रीजन्स टाउन, ठीक है। उज्जैन में अभी हमने देखा है कि देयर इज अ वेरी बिग कॉरिडोर ऑल्सो, जो अभी रिसेंटली ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ओमकारेश्वर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स, ठीक है। सन टेम्पल्स के लिए कौन कौन फेमस है? ऑप्शंस आप एक बार देखो, अरसावल्ली, अमरकंटक एंड ओमकारेश्वर. ना ओमकारेश्वर you already know is one of the Jyotirling. So when it's the Jyotirling, obviously it's not famous for the being a sun temple. So when you remove option 3, your option B, C and D are automatically removed. So you are left with option 1. So Arasavalli is one of the sun temples. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. Surya Narayan temple, which is also known as Arasavalli Sun Temple, it is located in Andhra Pradesh and it is dedicated to sun god. The creator of the temple was the ruler Devendra Sarna of the 7th century AD, and the temple is built in such a way that the sun's light falls on the feet of the Lord in earlier parts of the day. ओके तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अरसावली जो है सन टेम्पल है, और इसको सूर्य नारायण सन टेम्पल भी बोलते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है।
One more question was asked in from Omkareshwar. तो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज और लोकेशन कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कौन से हिल्स में कौन सी लोकेटेड है, ठीक है। सो जोग्राफिकली में हिल्स का जो पूरा है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप कोरिलेट करके भी अगर आपको लोकेशन पता हो, सो यू कैन लाइक एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड मार्क द आंसर करेक्टली। ओके, सो इसमें पहले आप देखो पुष्कर कहाँ पर है। पुष्कर, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो महादेव हिल्स में पुष्कर लोकेटेड नहीं है। पुष्कर इज इन राजस्थान। ओके, सो व्हेन यू रिमूव ऑप्शन 3, ऑटोमेटिकली योर 3 ऑप्शंस आर बीइंग रिमूव्ड, सो यू जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन which is option A. So Srisailam is in Nalamala Hills. Srisailam in Andhra Pradesh is one of the flat summit of the Nalamala Hills. It is known as the shrine of Lord Mallikarjun, ठीक है। और Sri Brahmaramba Mallikarjun temple, also known as Sri Sailam temple, is a Hindu shrine to the goddess of Parvati and Shiva. The temple is of 18 Shakti Peeths of goddess Parvati and 12 Jyotirlings or of Lord Shiva, and the lingam is representation of Shiva, which is worshipped as Mallikarjun. So Brahmaramba is a representation of Parvati. Okay. सो आप ये बताना कमेंट सेक्शन में कि ओमकारेश्वर कौन सी हिल्स में लोकेटेड है, ठीक है। जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये पता होना चाहिए कि महादेव हिल्स का है, सतमाला का है, नलमलाई का है, और बहुत सारी हिल्स है आपकी, शेवरॉय हिल्स है, कार्डमम हिल्स है, जितनी भी है सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जब हिल्स को आपको पता होता है ना, तो यू कैन मार्क द ऑप्शंस, लाइक आप सोच सकते हो इन दैट प्रेशर ऑफ द प्रीलिम्स आल्सो यू कैन थिंक, बिकॉज ज्योग्राफिकली यू नो विच हिल इज लोकेटेड वेयर। ओके, सो let's go to the next Jyotirling, Kashi Vishwanath Jyotirling. The temple stands today, was built by Queen Ahilyabai Holkar in the 18th century. काशी विश्वनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। This construction came as after the previous temple was demolished by Aurangzeb to make the way for mosque. And the architecture of Kashi Vishwanath is a beautiful mix of northern India Nagara style and certain Maratha design elements. The temple skyline is adorned by golden spire, adding a divine glow to the cityscape of Varanasi. Okay, so Kashi Vishwanath is in Uttar Pradesh. Next, Baidyanath Jyotirling. It is located in Deoghar and the Santhal Parganas division of state of Jharkhand. तो ये झारखंड में located है. And the temple complex consists of the main temple of Baba Baidyanath, where the Jyotirling is present, and 21 other temples. तो इसमें और बहुत सारे temples हैं, ठीक है। तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमारा झारखंड में लोकेटेड है in the Santhal Parganas division of the state, and the Baidyanath Dham has been famous since the rule of the last Gupta Empire, Aditya Sen Gupta, in 8th century AD, ठीक है। और मुगल एम्परर अकबर्स ब्रदर इन लॉ बिल्ट अ पॉन्ड एट देवघर, जिसको मानसरोवर बोलते हैं, और द टेम्पल appears to have been maintained its importance even during the Muslim rule in India. So according to the Hindu beliefs, the demon king Ravana worshipped Shiva at this place to obtain boons, which he later used to wreak havoc in the world. Okay. So Baidyanath Jyotirling कहाँ पर है? संथल परगनास डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। ओके, नेक्स्ट केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये तो हमको सबको ही पता होगा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है, और यहाँ पे चोराबारी ग्लेशियर में जब बर्स्ट हुआ था तब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और बहुत सारे फ्लड्स, और मतलब इट वाज अ वेरी बिग डिजास्टर एंड वी ऑल नो इट। सो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग इज लोकेटेड इन उत्तराखंड and it's a Hindu shrine dedicated to Lord Shiva, and it is located in Uttarakhand on the Garhwal range near the Mandakini river, and it's integral part of the famous चार धाम यात्रा, ठीक है। तो चार धाम यात्रा के लिए हर साल दर्शन यहाँ पे खुलते हैं, मई से अक्टूबर तक रहते हैं, एंड after that for 6 months it's closed because वहाँ पे बहुत ज़्यादा snow आते हैं, it's inaccessible. So Kedarnath Jyotirling, it's in Uttarakhand, and it is built in the 8th century by Adi Shankaracharya, and it's one of the 12 Jyotirlings in India. ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछ रहे थे कि कौन सा ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, तो दैट द नेम इज चोराबारी ग्लेशियर। ऑलराइट, नेक्स्ट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिव पुराण says Nageshwar Jyotirling is in the Darukavana, which is an ancient name of the forest in India. So Darukavana finds mention in Indian epics such as Kamakya Kavanam, the Advait Vana, and Dandakavana. So Nageshwar Jyotirling is in Gujarat. Okay. Next, Bhimshankar Jyotirling. Bhimshankar Jyotirling is located in Pune district of Maharashtra, and it is considered as the 12 Jyotirlings in India. सह्याद्री हिल्स में है ये, ठीक है। मैं जहाँ पे
hills लिखा होता है. I'm trying to focus more on that because as we've seen in the previous year's questions also, they do ask hills and the Jyotirling which is located there. ठीक है, तो in recent times Bhimshankar has gained tremendous significance since it was declared a wildlife sanctuary. This sanctuary is part of the Western Ghats. So Bhimshankar is source of the river Bhima. Okay, it's source of the river Bhima. हाँ, भीमा, मूसी, सीना किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में. ओके, नेक्स्ट Grineshwar Jyotirling. Grineshwar is situated in Aurangabad, again Maharashtra, and the temple was constructed by Queen Ahilyabai Holkar, and it is also known as Ghumeshwar. The archaeological antiquity goes back to the 11th-12th century CE. The temple name has been mentioned in the Purana literature such as Shiv Purana and Padma Purana, and it is made from red sandstone, and it is a 5-tier tier Nagara style shikhar, and the statue of Nandi is a bliss to the eyes of visitors. UNESCO World Heritage Site Ellora Caves are very close. Okay, about 7 to 10 minutes drive further from the temple. So Grineshwar Jyotirling is again located in Maharashtra. All right. Next, Trambakeshwar Jyotirling, Maharashtra. Trambakeshwar Shiva Temple, Sri Trambakeshwar Jyotirling is an ancient Hindu temple in the town of Trambak, Trambakeshwar Tehsil in the Nasik district. महाराष्ट्र, नासिक. ठीक है, ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर. ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि बारिशों में स्पेशली मतलब बहुत ज्यादा मतलब रिवर इज एट इट्स पीक, बहुत ज्यादा पानी होता है. ठीक है, तो द टेम्पल इज लोकेटेड बिटवीन द 3 हिल्स नेमली ब्रह्मगिरी, नीलगिरी एंड कालागिरी. ठीक है, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी एंड कालागिरी. द टेम्पल हैज 3 लिंक्स, एन आइकॉनिक फॉर्म ऑफ शिवा रिप्रेजेंटिंग शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा. Trambakeshwar Jyotirling, Maharashtra. Alright. So next is Rameshwar Jyotirling. It is located in the Rameshwar Island, Tamil Nadu. And Rameshwar Swami Temple is a Hindu pilgrimage site and one of the 12 Jyotirling temples. Its sacredness is attributed to its association with Lord Rama, the 7th avatar of Vishnu as described in the epic Ramayana. ठीक है, तो Rameshwar Jyotirling. So here we have completed our 12 Jyotirlings, and as you have seen that many questions are asked repeatedly from Jyotirlings in India. So you should be aware of all the 12 Jyotirlings, the state where they are located, the specific hills where they are located, where the rivers which are flowing through it, or the sources of river, and if there's something important going on in the Jyotirlings, or if there's a new circuit, new corridor, new statues, inauguration, anything which is happening or in the news of a particular Jyotirling, you should remember it, because previous years में काफी questions इससे पूछे जाते हैं. Okay, so here we have completed the 12 Jyotirlings, and guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.